Good afternoon. My name is Pratik Gupta, and I am teaching to the civil service aspirants for the last 10 years in the offline mode. So recently, I joined Unacademy to teach students in the online mode also. So today is my first session, and the topic that we're going to discuss is going to be the very simple one. Okay, so the topic will be that we're going to discuss today is do we have tax on clean air in India? See, जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो नॉर्मली जब डिस्कशन क्लास में चल रही होती है तो स्टूडेंट्स में से एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सर जितना आजकल हमारे देश में एयर पॉल्यूशन हो गया है, वट एवर एयर पॉल्यूशन वी हैव इन अ कंट्री, डेफिनेटली अ टाइम विल कम दैट यू नो वी नीड टू पे टैक्स फॉर द क्लीन एयर ऑल्सो. जैसे भी आप लोगों ने रिसेंटली देखा कोविड 19 के टाइम में जो अभी भी चल रहा है, जैसे द पीपल वर रियली फेसिंग शॉर्टेज फॉर द ऑक्सीजन इन अ कंट्री. तो बात ये आती है कि क्या ऐसा टाइम भी आएगा कि हमें हमारे देश के अंदर कि हमें जो क्लीन एयर है, जो शुद्ध हवा है, उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा. और देखिए, हमेशा मेरा आंसर जो स्टूडेंट से क्लास में होता है वो ये होता है कि येस वी हैव टैक्स ऑन द क्लीन एयर इन केस ऑफ आवर कंट्री. बस पॉइंट ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बट आप मान के चलिए कि हमें टैक्स देना पड़ता है. कैसे है कैसे नहीं है ये मैं आपको समझाता हूँ. जैसे आप लोगों को पता है कि जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसके अंदर यू मस्ट बी अवेयर दैट वी हैव डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स कि 2.5 है एंड दी अदर पॉल्यूटेंट्स दैट वी हैव एंड दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने घर में आपने जानते हैं कि जैसे हम एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, कितने का होता है क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कितना टैक्स ऑल इन ऑल आपको पे करना पड़ता है टू बाय द क्लीन एयर प्यूरीफायर. then how much amount of money you need to pay for electricity and how much amount of money you need to earn to pay for those things. Okay, but before स्टार्टिंग द वीडियो कुछ बेसिक बातें अनअकैडमी के बारे में जो आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बाकी सारे एजुकेटर्स भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी. जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट online platform for the purpose of students learning in the different streams, like for the schools, colleges, and moreover about the UPSC also. So this channel, as you know, is for the UPSC purpose only. So now, as you know that we people are having the best educators across the country, तो जो भी आपकी convenience के हिसाब से और जो भी educators आपको ठीक लगते हैं उसके हिसाब से you can simply choose and enroll for the courses. Okay, names आपके सामने mention है, so accordingly whatever you think that you want to join, you can accordingly choose and you can join that educator. Okay, moreover, to have even more information about the Unacademy, you can simply join our Telegram channel. The link is being given here, and moreover you can also go for the community and the link is also being provided in the given video. Okay, after that आप जानते हैं कि lot of acceleration is being going on towards the UPSC preparation, because it's just that you can say you are currently in the month of August and you're going to have your prelims in the month of June. तो अगर आज से काउंट करें तो अगस्त तो ऑलमोस्ट हाफ निकल ही गया मान के चलें. तो यू हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, and then you have 6 more months. So it's just that you can say you're being left with only 10 to 11 months for your preparation. तो इसके लिए देखिए हमारे पास अनअकैडमी में दो तरह के कोर्सेज हैं आपके पास. एक तो आइकॉनिक एंड दूसरा इज प्लस कोर्सेज. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोर्सेज? आइकॉनिक कोर्सेज में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, प्लस यू आर आल्सो गेटिंग द मेंस टेस्ट सीरीज क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, so if you say simply join these courses like in a combo form, obviously like the GSN as the optional, then you need to pay for 36 months around 1,04,000 rupees if you join the plus course, and if you join for iconic course you need to pay 1,57,499 rupees, and that is for 3 years plus 1 year extra. That means you're going to get the things for 4 years. Okay, moreover we also have the facilities of our notes that you can simply download with the help of link given in the description. Simply click on that and you will be able to download the notes. Then as per your convenience, जैसे आप लोग जानते हैं हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है कि कोई bilingual ज़्यादा kind of more comfortable, the certain people are being more comfortable in English. So as per your requirement you can simply go for bilingual, English medium, Hindi medium, whatever way you want to join. Okay, and the batches are going to start from 12th of August 2022. Moreover, those students who are from economically weaker section, they can simply go for the 0% EMI. And for this purpose, you just need to call up our customer care. You just need to contact us and they will simply guide you that how you can go for the 0% EMI offer. Okay, and then you have the UPSC Combat. So again, you have a very good offer in terms of that if you are being able to solve certain number of questions. So basically you have 50 questions that you need to solve in 60 minutes. So if you are one of the topper in that, then certainly you will be able to get
of up to 50% of the subscription. So that depends upon the rank you've been getting. So up to 500 rank, you people are being able to get good amount of open subscription. Now, let's come to the topic that we're going to discuss today. So as I was saying that how much amount of tax we need to pay when it comes to having the clean air in the inside our houses. जैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि आज के टाइम में अगर आपको अपने घर के अंदर you want clean air, that means you want the air inside your house is to be completely free from the air pollutants and the other, then you have to buy something called an air purifier. Okay, so currently if you talk about the air purifiers in case of our country, so 18% GST is being applied by government of India on that. So 18% GST is being applied by government of India on that. Now, when it comes to 18% tax on this particular thing, so imagine you are buying an air purifier worth of 20,000 rupees. So 25,000 rupees of air purifier, which is basically inclusive of your GST amount, imagine. Okay, so in this case if you want to buy this air purifier with 20,000 rupees worth of GST, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इस पे GST कैलकुलेट करेंगे at the rate of 18% which is inclusive in that price, so around आपको 3,050 rupees का GST भरना पड़ता है. That means the cost of the air purifier is basically 16,950 rupees and the amount that you're paying is around 20,000 rupees. So in a way 3,050 rupees worth of GST you people are being paying when it comes to buying an air purifier. Okay, now if you need to buy an air purifier worth of 20,000 rupees, देखिए बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है. आप जानते हैं हमारे देश में अगर आप कुछ कमाते हैं सो ऑन दैट अमाउंट यू नीड टू पे टैक्स ऑन दैट, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है. So obviously a person who is being earning less than 5 lakh rupees, they don't have that much amount of money by which they can afford the air purifier. But certainly you can say if you're from middle class, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मान के चलिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं और आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है, okay, if your income is up to 10 lakh rupees, then certainly you can say you need to pay tax. So as you know, income tax slab के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप 0 से 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है. ओके, बट इफ यू अर्निंग फ्रॉम 2.5 to 5 lakh rupees, you need to pay 5% tax to the government, and if you're earning between 5 to 10 lakh rupees, you need to pay 20% tax to the government of India. Okay, over and above this, you also need to pay 4% education cess. You also need to pay. That is basically health and education cess. So in this scenario, if you are earning 10 lakh rupees, okay, so obviously more than 5 lakh rupees, whatever you will earn, you need to pay 20% tax on that, plus 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस. यानी कहने का मतलब क्या है, 20% के ऊपर जब आप 4% सेस और देंगे तो ओवरऑल मान के चलिए करीब करीब 0.8% का टैक्स आपकी इनकम पे और बढ़ जाता है. सो करीब करीब आपको 20.8% टैक्स देना पड़ेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एयर प्यूरिफायर अफोर्ड करना है 20,000 रुपीज का, तो इसके लिए आपको कितने पैसे कमाने होंगे. तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं, व्हेन यू अर्न अराउंड रुपीज 25,250 रुपीज इन टोटल, जब आप 25,220 रुपए कमाते हैं और इसके ऊपर जो आपको टैक्स बनना है वो है आपका 20.8% के आसपास, तो आपका टैक्स बनता है 5,252 रुपीज. सो इन अ वे आपके पास रह जाते हैं करीब करीब 20,000 रुपए. तो कहने का मतलब क्या है, 20,000 रुपए का एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए आपको करीब करीब 5,252, दैट मीन्स 5,252 रुपीज का आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. तो टैक्स का अमाउंट कितना हो गया आपका, सिंपल सा लॉजिक है, आपने 3,050 रुपए का पे किया जीएसटी और आपने पे किया 5,252 रुपए का आपने इनकम टैक्स पे किया. दैट मीन्स इन टोटल व्हेन इट कम्स टू पेइंग द टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी एंड इनकम टैक्स, तो आपके 3,050 प्लस 5,252 अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, सो इन टोटल यू आर पेइंग 2,003 एंड देन यू हैव 8, सो अराउंड 8,302 रुपए के आपको जीएसटी और इनकम टैक्स देना पड़ता है. यानी कि अगर आपको अपने घर में क्लीन एयर चाहिए जिसके लिए आपको एयर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा, तो 3,050 रुपीज का जीएसटी प्लस 5,252 रुपीज का इनकम टैक्स जब आप पे करेंगे, तब आप 20,000 रुपीज कमा पाएंगे और आप मान के चलिए और आप एक एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर पाएंगे. ठीक है, पर देखिए बात केवल यहाँ पे खत्म नहीं होती है. अब देखिए हम मानते हैं कि जब ऑब्वियसली आप एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, वो किसी और चीज से चलेगा नहीं. ठीक है,
तो अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए एक 100 वॉट का एयर प्यूरिफायर आपने खरीदा और उसे आप दिन में 24 घंटे यूज करते हैं, दो यूसेज वेरी वेरी फ्रॉम हाउसेज टू हाउसेज, बट द पॉइंट इज व्हाट, अगर आप 100 वॉट का एयर प्यूरिफायर खरीदते हो 24 घंटे चलाते हो, तो कहने का मतलब क्या है कि एक दिन में करीब करीब आपकी 2.4 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम होती है। ओके, दैट मीन्स in 365 days if you are using 2.4 unit of electricity, that means in total 876 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की आपकी कंज्यूम होगी। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल, सिंपल से कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आप गुड़गांव हरियाणा में रहते हैं तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो बिल आता है वो आपका 6 रुपए पर यूनिट के आसपास आता है। ओके, that means to consume 876 units of electricity, if you multiply 876 with 6 rupees per unit, so in total 5,256 rupees worth you need to pay for electricity bill। ठीक है, प्लस जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हैं 5256 का, इस पे 2% का इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है यहाँ पे, दैट मीन्स अराउंड 105 रुपीज वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैक्स यू नीड टू पे when you're living in Haryana, Gurgaon, when you need to use the air purifier। आप जानते हैं कि गुड़गांव इज इवन मोर पॉल्यूटेड इन कंपैरिजन टू दी न्यू दिल्ली, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो न्यू दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लास्ट ईयर एवरेज था दैट वाज अराउंड 195 एंड इन केस ऑफ गुड़गांव इट इज मोर देन 200। तो कहने का मतलब है 105 रुपए आपने और इलेक्ट्रिसिटी के टैक्स के पे किए। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है, ये 5,256 रुपीज अगर आपको पे करने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के, तो आपको एक कमाने पड़ेंगे, यू नीड टू अर्न इट, और जो आप कमाएंगे उसके ऊपर ऑब्वियसली आप पहले टैक्स पे करेंगे, तब आपको इतनी कमाई होगी, दैट यू विल बी एबल टू अर्न 5,256 रुपीज ओनली व्हेन यू सिंपली पे टैक्स। ठीक है, तो मान के चलिए इतने रुपए कमाने के लिए पहले आपको 1,380 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, income tax, that is again 20.8% something, so that means when you do the total of these two, that means you need to earn around 6,636 rupees। यानी कि जब आप इतना कमाएंगे तो आपको इतना मिलेगा हाथ में, क्योंकि ये तो आपका चले जाएगा इनकम टैक्स के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो पहले उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए, प्लस जब आप उस अमाउंट को पे करना चाहते हैं तो उसको कमाने के लिए जो आपने टैक्स पे किया उसके बाद आपके पास ये नेट हाथ में बचता है। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए आपको 1,380 का टैक्स देना है, प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स देना है, प्लस whatever amount of money you earned, to buy that air purifier, again you paid good amount of tax, 5252, and how much amount of GST you paid? 3050. So in total, when it comes to that, how much amount of tax you need to pay if you're buying an air purifier in a country and to have clean air inside your house। देखिए outside की तो मैं बात ही कर रहा, because outside is not under your control। So if you need to simply have the clean air inside your house, so you need to pay 3,050 rupees worth of GST, 5,252 worth of income tax to earn 20,000 rupees, 105 rupees worth of electricity tax you need to pay, plus 1,380 rupees more tax you need to pay the electricity bill as an income tax। So in total, हमारे देश में अगर आपको इंडिया में क्लीन एयर चाहिए इनसाइड योर हाउस, so you need to pay 9,787 rupees worth of total tax, including your GST amount, your income tax to buy the air purifier, your electricity tax, and then after that you also need to pay income tax to pay that particular amount for the purpose of this। तो देखिए कहने का मतलब और लॉजिक बहुत सिंपल है कि माना हमें बाहर जाके क्लीन एयर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और देखिए उस पर हमारा जोर भी नहीं है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज हमारे देश में काम कर रही है, whatever air pollution and the other issues we have in our country, that is not in our hand, but obviously inside our house we have lot of options that you can buy the clean air purifier। प्लस बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, आप जानते हैं हमारे देश के अंदर कि हमें अपने घर में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाने चाहिए। डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, दैट विल आल्सो लीड टू लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स आल्सो, बट द पॉइंट इज व्हाट, दिस थिंग, you can't plant plants, clean plants inside everywhere in your house। So obviously it will help in terms of cleaning the air, but the point is अगर आपको हवा चाहिए शुद्ध घर में तो उसके लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको हमारे देश में क्लीन एयर अफोर्ड करनी है
तो आपको 9,787 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए केवल सोचने वाली बात है, ठीक है, बट हम लोग जब पे करते हैं तो हम कभी इन चीज़ों को दिमाग में लाते नहीं है कि क्या हमें वाकई में टैक्स देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है। बट आप जानते हैं एयर प्यूरीफायर का कॉन्सेप्ट हमारे देश में काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी टाइम से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं दोज पीपल आर बीइंग कंपैरेटिवली रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे हैव मल्टीपल एयर प्यूरीफायर्स in their houses, and they are being paying, but the point is what these people are not feeling lot of pinch in terms of paying taxes because they have good amount of earnings with them. ओके, तो बस एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों से साझा करना चाहता था, जो आप लोगों से सब बांटना चाहता था, थोड़ा बहुत आपको बताया, और इसी तरह विद इवन मोर वीडियोस आई विल कम इन दी अपकमिंग टाइम। ठीक है, बट बिफोर एंडिंग ऑफ द वीडियो जस्ट 1 or 2 मोर थिंग्स। सो वाई यू नीड टू चूज Unacademy, बिकॉज आपको मैं बताऊं मैं भी अपना बैच जल्दी ही यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट करने वाला हूँ विद दी सेपरेट इकोनॉमिक्स क्लासेस, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट the classes with the other faculties, also a complete batch for the GS. So if you want to join, if you want to have the best education, then simply join and you will be able to get the knowledge from the widest educator, flexibility to change course, and what not benefits you're going to get here. Okay, so moreover this is one thing, and then lastly we have a doubt darbar that you can simply enroll for it for free. So 9th of August you will get for economy, environment and science and technology. On 10th of August you will get for history and geography, and on 11th of August you will get for polity, IR and current affairs. So for the purpose of enrolling, you can simply click in the description, or you can simply scan this QR code and you will be able to get a best solution for your doubts. Okay, thank you very much, take care, and do like my video. Bye bye.